वेलकम टू माय क्लास। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर दिए गए कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस को टेकअप करेंगे एंड दिस इज पार्ट नंबर 1। आइएगा मूव करते हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के एक क्वेश्चन की तरफ। इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। एशिया लिमिटेड सेल्स द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स दैट इज 20,000। Selling price per unit is rupees 28. Variable cost per unit is rupees 14. Fixed cost is of 80,000 rupees. Because of increase in the cost, the management is considering either to increase the sale quantity or to increase the selling price. You are required to calculate A. New sales quantity and B. New selling price to maintain the same amount of profit when increase in variable cost per unit is by rupees 4। यहाँ पर हमें ये इनपुट्स दी गई हैं, इसके बेस के ऊपर हमें पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ और इसके लिए मैंने कुछ फॉर्मेटिंग पहले ही कर दी सो एज टू सेव टाइम। सबसे पहले मैं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन को लेफ्ट साइड में नीचे जनरेट करूंगा। सो आई स्टार्ट विद द आंसर यूनिट्स सोल्ड। दिस इज इक्वल्स टू 20,000। जिन पर्टिकुलर सेल्स को मैं रेफर करूंगा वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर देता हुआ चलूंगा। नेक्स्ट इज सेलिंग प्राइस पर यूनिट। This is equals to 28 rupees. The next one is variable cost per unit. This is equals to 14 rupees. स्टूडेंट, क्योंकि हमें ये कहा गया है इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज बाय रुपीज 4, सो मैं यहाँ पर इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट को टेकअप कर रहा हूँ। Now I calculate the contribution per unit. This is equals to selling price minus variable cost. We get contribution per unit as 14 rupees. Now I calculate the total contribution. This is equals to contribution per unit multiplied with units sold, that is 2,80,000 rupees. The next is fixed cost. This is equals to 80,000 rupees. Now I calculate the profit. This is equals to 2,80,000 minus 80,000। स्टूडेंट, मैंने प्रॉफिट को इसलिए कैलकुलेट किया क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि हमें वही सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को मेंटेन करना है। तो जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट है मैंने उसको यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया एंड दिस कम्स टू रुपीज 2 lakhs। नाउ द क्वेश्चन इज यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ए न्यू सेल्स क्वांटिटी। अब मैं यहां पर न्यू नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड टू मेंटेन द प्रेजेंट लेवल ऑफ प्रॉफिट को टेकअप कर रहा हूं। दिस इज इक्वल्स टू डिजायर्ड प्रॉफिट। डिजायर्ड प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 2 lakh rupees। We will add the fixed cost. This is equals to 80,000 rupees. Now the total contribution. This is equals to desired profit plus fixed cost.
Now the new contribution, this is equals to B13 minus variable cost minus increase in the variable cost, that is given to us in cell number E14. This comes to rupees 10. So we want to calculate when variable cost is increased by rupees 4, then what will be the number of units sold to maintain the present level of profit. Required number of units. This is equivalent to I5 divided by new contribution amount. It comes to 28,000. सो स्टूडेंट, जब वेरिएबल कॉस्ट के अंदर ₹4 का इंक्रीज है और हम सेम डिजायर्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को अर्न करना चाहते हैं, नाउ वी नीड टू सेल 28,000 यूनिट्स. द सेकेंड पॉइंट इज न्यू सेलिंग प्राइस टू मेंटेन द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट व्हेन इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट यूनिट इज ₹4. यहां पर मैं टोटल सेल्स को टेकअप करना चाहता हूं. टोटल सेल्स इज इक्वल टू डिजायर्ड प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. हियर आई राइट डिजायर्ड प्रॉफिट. दिस इज इक्वल्स टू ₹2 lakhs. Now I will add up the fixed cost. This is equals to 80,000 rupees. Now add total new variable cost. This is equals to total number of units sold multiplied with parenthesis start variable cost. This is the previous variable cost plus this is the additional variable cost. Parenthesis close. I press enter. मेरे पास टोटल न्यू वेरिएबल कॉस्ट 3,60,000 रुपया आ गई. नाउ टोटल सेल्स. This is equals to desired profit plus fixed cost plus new variable cost. I press enter. It comes to 6,40,000 rupees. Now the number of units sold, that is 20,000 units. Now I can calculate the selling price per unit. This is equivalent to total sales amount divided by 20,000 units. It comes to 32 rupees. सो इस तरह स्टूडेंट हमने अपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया. हमारे पास दो रिक्वायरमेंट कही गई थी. न्यू सेल्स क्वांटिटी व्हेन वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीज बाय ₹4. उस केस के अंदर हमारे पास 28,000 यूनिट्स आए. सेकेंड है न्यू सेलिंग प्राइस टू मेंटेन द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हमारे पास नया सेलिंग प्राइस पर यूनिट 32 रुपीस आया. राइट साइड के ऊपर मैंने जिन सेल्स को रेफर किया है ये मैंने आपकी रेफरेंस के लिए इनको लिख दिया. लेकिन स्टूडेंट इस बात को ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आपको बेसिक इंफॉर्मेशन को जनरेट करना है, उसके बाद इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा. आई होप दैट नाउ यू कैन सॉल्व एनी ऑफ दिस क्वेश्चन क्वाइट इजीली. थैंक यू वेरी मच.